Greetings of the day. This is Dr. Reena Pathak, Principal of St. M.R. Jaipuria School, Goel Campus. We heartily wish everybody a very, very happy Diwali. May you have a real, prosperous and safe Diwali. On this auspicious occasion, Goel Campus is proud to launch its first news bulletin, which has been framed and executed by the students themselves under the training of their mentor, Mrs. Geeta Onial. So the news bulletin is JSGC, that is Jaipuria School, Goel Campus Global News Bulletin. We hope and pray that students do take this as an opportunity, as a platform to give vent to their thoughts about whatever is happening around them and give a new kind of texture to this bulletin, which is all theirs. So happy listening, happy viewing for the launch of the new bulletin, which would be launched on Dhanteras, that is the 22nd of October 2022. Stay safe, stay happy. Here is the news from St. M.R. Jaipuria School, Goel Campus. The Dandelion 4.0 was celebrated in St. M.R. Jaipuria School, Goel Campus with full energy after 2 years of pandemic. It is the time for celebration, a time for victory of good over bad, a time when world see the example of power of good. Let us continue the same true spirit. This event of happiness and joy was inaugurated by our Honorable Managing Director, Mr. Mahesh Agarwal, and our respected Principal, Dr. Reena. सर, किस तरीके का ये आज इवेंट है और क्या कुछ आपके कैंपस में आपको? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी अपने मीडिया लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमारे इस गोयल कैंपस में अपनी जो चौथी डांडिया नाइट मना रहा है। हर साल हम लोग 2016 से मनाते आ रहे हैं और बीच में कोविड की वजह से 2 साल हम लोग ये उत्सव नहीं कर पाए, और आज इसी का आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जोश और उससे सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हम लोग नवरात्रों में ये इवेंट करते हैं जो कि एक सभी सोशल कॉज है, और इसमें जो है तरह तरह के आयोजन आपके सामने उपस्थित है। आमतौर पर देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाती है, पर आप जो है ट्रेडिशनल कल्चर की तरफ बच्चों को लेके आ रहे हैं। कितना ज़रूरी है ये आज के टाइम में एजुकेशन? देखिए, एजुकेशन में हर तरह के और ख़ास करके हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे हर त्योहारों को हम लोग हमेशा धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो न्यू ईयर के हों, चाहे वो वेस्टर्न हो, लेकिन एक डांडिया का एक अलग अपना महत्व है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने जो भारत की संस्कृति है उससे जुड़े रहें, जिससे कि एक बच्चों को एक पूरा मैसेज जाता है कि हम लोग किस तरह से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके का ये कल्चरल इवेंट है, क्या क्या कुछ आज खास है आपके यहाँ? ये हमारा जयपुरिया गोयल कैंपस का सिग्नेचर इवेंट है। ये चौथा साल है। इसको हम लोगों ने नंबर दिया है 4.0 बिकॉज पैंडमिक के 2 साल हम इसको नहीं करा पाए, लेकिन 2017, 2018, 2019 और आज ये 2022 में हम ये इवेंट 1 अक्टूबर को करा रहे हैं। नवरात्रि स्पेशल ये इवेंट होता है एंड द पर्पस इज टू गैदर पेरेंट्स ऑफ द विसिनिटी एज वेल एज गिव देम रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज दुर्गा's blessings on all. भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला ये आपका इवेंट है, कितना ज़रूरी है शिक्षा के साथ साथ उसका? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पैंडमिक में हम लोगों ने नोटिस किया कि बच्चे घर से तो ज़रूर जुड़ गए, लेकिन उनमें जो वैल्यूज़ थी उनकी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुई, उनमें फ्रस्ट्रेशन आया, एंगर आया। तो जब ये फेस्टिवल्स वो मनाते हैं तो उत्साह के साथ वो बहुत कुछ और भी सीखते हैं, जैसे कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कैसे हम मैनेजमेंट, जैसे अगर ये इवेंट हम देखें तो हमारी जो स्टूडेंट काउंसिल थी, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिकट्स एंड दे डिड दैट जॉब वेरी वेल बिकॉज उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उन्होंने उसे बखूबी निभाया। मकसद क्या है इसके पीछे मकसद क्या है?
एजुकेटेड है, फैमिली एजुकेटेड है, फैमिली एजुकेटेड है तो सोसाइटी एजुकेटेड। There were around more than 4,000 people present in the celebration, dressed up in mesmerizing traditional colorful attires. There were many dance performances by our school teachers and students. We also had celebrities like Mrs. Sanjana Mishra as our anchor. Hello and thanks for joining us. This is Kavya Gupta from JSGC Global Bulletin presenting international news. A revived Hurricane Ian has terrorized people for much of this week in the United States. It is estimated to be one of the costliest hurricanes ever to hit the US. It pummeled western Cuba and raked across Florida before gathering strength in the warm waters of the Atlantic Ocean to curve back and strike South Carolina. It ripped apart piers and flooded streets, trapping thousands in their homes and leaving at least 83 people dead. Ukraine's president says his country is submitting an accelerated application to join the NATO military alliance. The comment on Friday by President Zelensky came just after Russia said it would annex 4 regions of Ukraine that it seized amid its war and held gunpoint referendums viewed as illegitimate by the international community. Mr. Zelensky said, "We are taking our decisive step by signing Ukraine's application for accelerated accession to NATO." North Korea on Saturday fired 2 short-range ballistic missiles towards its eastern waters, South Korean and Japanese officials said, making it the North Korea's 4th round of weapon launches this week that are seen as a response to the military drills among its rivals. The repeated ballistic missile firings by North Korea are a grave provocation that undermines peace and security on the Korean peninsula and in the international community. South Korea's Joint Chief of Staff said in a statement. NASA said it would try to launch its moon mega rocket in November without committing to a precise date for the much delayed Artemis 1 mission. The US space agency, which was forced to postpone its latest liftoff attempt due to the massive Hurricane Ian, which hammered Florida this week, announced it was preparing its next launch window between November 12th and November 27th. Later this week, the richest man Elon Musk showed off the latest version of a humanoid robot, Optimus, that according to him could one day eliminate poverty. An Optimus prototype, which is a work in progress, wheeled on stage during an annual Tesla AID presentation. It waved to the audience and raised its knees. Musk addressed the audience and said, "Our goal is to make a useful humanoid robot as quick as possible." Thank